Okay, hello class 12th. Today the topic of our discussion is about the moving charge. क्या करना है हमने आज? We have to discuss about the moving charge. But before starting our discussion, let us revise the things which we have done in the previous video. In the previous video, we have discussed about the Biot-Savart law. Biot-Savart law के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है. We have also studied about the Oersted experiment. Oersted ने क्या किया था? He has proved that there is a formation of magnetic field around the current carrying conductor. उसने ये prove किया था. And we know that the value of this mu 0.4 pi, this is what? This is the proportionality constant, and its value is 10 to the power minus 7 Tesla meter per ampere. Now today we are finding the units of this magnetic field in terms of basic units. Basic units के terms में मुझे निकालना है इसको. We are also finding the dimension of this mu 0, and we are establishing the relation between the mu 0 and epsilon 0. Now let us first of all find out the value of magnetic field in terms of basic units. So एक फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, that is F equals to Bell, where B is the magnetic field, this I is the current, and this L is the length of the conductor, and this is the force acting on the current carrying conductor. ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अभी आगे जाके भी इसको इसी चैप्टर में करना है. बट आई एम फाइंडिंग द यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम हियर. यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन क्या है कि ये प्रॉब्लम करेगा, पहले मुझे इसके यूनिट्स निकालने पड़ेंगे. और आई कैन से कि पाई का तो कोई यूनिट नहीं होगा, बट म्यू 0 के यूनिट्स होंगे. तो वी हैव टू पुट द यूनिट ऑफ म्यू 0, then our answer will come. So यहाँ से डायरेक्टली हो रहा है, तो आई एम डूइंग इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर. तो यहां से B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे? आपका B इक्वल्स टू हो जाएगा B इक्वल्स टू F अपॉन IL. फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, बट न्यूटन नहीं चाहिए, बेसिक यूनिट्स चाहिए. सो फोर्स को लिखा क्या? MA एंड IL. नाउ मास विल बी इन kg. Mass will be in kg. This acceleration will be in meter per second square. This will be in ampere, and this length will be in meter. So from here, this meter get cancelled, so we get kg per second square per ampere. So this is the unit of B in terms of basic units. अब आगे चलते हैं. लेट अस फाइंड आउट द डायमेंशन एंड द यूनिट ऑफ दिस म्यू 0. इस म्यू 0 के भी यूनिट और डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं. सो लेट अस टेक द बायोट-सावर्त लॉ एज इट इज. सो B को मैंने लिया. सो B पहले डायमेंशन भी लिख देते हैं इसकी. यहीं से डायमेंशन विल बी हाउ मच? डायमेंशन विल बी M, एंड L is not here, T minus 2 and A minus 1. So this is the dimension of magnetic field. We leave it like this only. So now we are taking the Biot-Savart law. Let us try to find out the dimension of this mu 0. 4 pi IL sin theta upon r square. So mu 0 को सब्जेक्ट बना दो पहले तो mu 0 will be equals to how much? Mu 0 will equals to B 4 pi r square upon IL sin theta. So from here, dimension of this B we have already calculated. इस B का dimension मैंने already निकाल दिया, तो डायरेक्टली हम लोग पुट अप कर सकते हैं. अगर नहीं पुट अप करना चाह रहे हैं तो we can find it from here. यहाँ से दोबारा फाइंड आउट करोगे और उसको फिर यहाँ पर पुट करोगे. So but I am putting the dimension directly here. So it will be M T minus 2 and A minus 1. The dimension of this 4 pi की कोई dimension नहीं होगी. This R means L2 upon I means A only, and this L means capital L. So एक L से एक L कम हो जाएगा. So I am writing the dimension. So dimension will be M and T minus 2 only, and A will become A minus 2, and L gone up, and L. So this is the dimension of this mu 0, and mu 0 it is nothing but it is the permittivity of the
परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या है ये? परमेबिलिटी है किसकी? फ्री स्पेस की। अब क्या करते हैं, एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। लेट अस डिराइव द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन जीरो एंड दिस म्यू जीरो। म्यू जीरो में और एप्सिलॉन जीरो में एक रिलेशन को फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, वी आर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन देम। सो लेट अस राइट इट हियर। सो म्यू जीरो एंड एप्सिलॉन जीरो में क्या कर रहे हैं हम लोग? रिलेशन का। वी नो के दैट म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू 10 की पावर 7. Okay, it is 10 की power 7, so no need of writing it, or if you want to write down the unit, you can write down Tesla meter per ampere. And similarly 1 upon 4 pi epsilon 0 equals to 9 into 10 की power 9. So what about the unit? Unit you can find out from the Coulomb's law. Okay, that F equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon r square. So from here we can say the unit of 1 upon 4 pi epsilon 0 will be how much? Newton meter square per coulomb ka square. So you can write down the unit Newton meter square per coulomb square. So this is the unit of that. Now after this, say this is your first equation. ये first हो गई है बेटा, और ये कौन सी हो गई है? This is the second equation. Now what we have to do? We have to divide the first equation. First को divide कर दो किससे? Second से. Divide first equation with second. So जब divide करेंगे तो then we will get mu 0 upon 4 pi into 4 pi epsilon 0 upon 1 we can say, और यहां से कितना आ जाएगा? From here we get 10 की power minus 7 upon 9 into 10 की power 9. So 4 pi get cancelled. Mu 0 epsilon 0 equals to 1 upon 9 into 10 की power how much? 16. Now mu 0 epsilon 0 को as it is रहने देते हैं, and in place of this I am writing it in other way, 10 की power 8 का whole square ऐसे करके लिख दिया. Now what is this? This is the speed of light. ये क्या है? Speed of light. So we get mu 0 epsilon 0 equals to 1 upon c का square. So from here c equals to 1 upon under root mu 0 upon epsilon 0. This is the important relation which helps you a lot in the study of electromagnetic waves. जब electromagnetic waves की study करेंगे, so in that case it is very helpful. So इसके बाद क्या करते हैं? Let us compare this law, Biot-Savart law and Coulomb's law. Coulomb's law को और Biot-Savart law को दोनों को compare करते हैं. Relation we have established. So सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि what does the Coulomb's law says you? Coulomb's law and we are comparing the Biot-Savart law. Okay, इन दोनों कंपेयर कर रहे हैं. इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? We can find out the electric field. Electric field can be finded out from by using the Coulomb's law. तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा आपकी आएगी 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square. इससे क्या निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी B equals to mu 0 upon 4 pi and IL sin theta upon r square. Okay, so the Coulomb's law gives you the electric field. Biot-Savart law gives you the magnetic field. Biot-Savart law क्या दे रहा है आपको? मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है. सेकेंड जो ये Q है, this is what? This is the charge and this charge is the scalar quantity. क्या होगा? scalar quantity होगा. यहां पे जो IL है, this is the vector quantity. ये क्या होगा? आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा. एक सिमिलरिटी भी है दोनों में. सिमिलरिटी क्या है कि बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ. यहां पर भी आर स्क्वायर है, यहां पर भी आर स्क्वायर, दैट मींस बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ. थर्ड डिफरेंस में अगर हम लोग जाएं तो व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस? थर्ड डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस.
तो दो चार्ज हैं, उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का क्या होगी, हमेशा उस लाइन में ही होगी. बट हियर the magnetic field, the direction of the magnetic field is always perpendicular to the current, or we can say it is always perpendicular to the charge. Charge के क्या होगी, perpendicular होगी. So this is the similarity, this is the comparison between both of these law. Okay, the notes I will send you, copy those notes and please revise it. काफी लंबा chapter है. Okay, it is a lengthy chapter. Question answers, so derivations are itself the question answers, so no need of doing them. अब मैं बता दूंगा जो important लगेगा मुझे, I will tell you to do those questions, but some numericals we have to do, but later on after completing the chapter. Okay, so for today, thank you very much.